A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Today we are going to do try to understand Farsi, and this is just a recap for some of my students who studied Farsi with me a long time ago. Uh, Alhamdulillah, they are occupied with their jobs and they just wanted a recap. And for new students who are studying Farsi as well, so this is something that they can relate to on YouTube. So particularly this is for my first group of students, Hassan, the two Hassans, Husseini and Abdurrahman, Moiz, Zain, Hasnan, Ghaus. They studied Farsi with me at the age of, I think, 13 or 14, but Alhamdulillah, they're all occupied with their jobs now and doing really well. Some of them requested me to do some videos so that they can recap on what they learned. So we all know that most of our books that we study in the syllabus, Dars Nizami, were in Persian, like Nahmid and Sarf Bihai, Mizan al-Sarf, Munshaib, Ilm al-Siga, and these are some of the books that they learned. But and especially Maulana Naeem Sahab, he didn't study Farsi, but Alhamdulillah, he doing some of the sciences. And we understand that Farsi is one of the languages that is taught in all the Islamic schools, madrasas. And so in this regard, we studied this even at WFIA. We started with Farsi when I started teaching. So this is like in all other subjects, there is always a poem, a nazm at the beginning. Like in Nahav, we studied this. There was a poem that we first studied in, which was in Farsi. Tahmid Khudawan Durud Mustafa Nate Ale Pake Pagambar Rasool Mujtaba Hast Madhe Hasro Ghazi Moinuddin Hussain. So this was a poem that we studied and we learnt before we started doing Ilm al-Nahav. Same way in Sarf and in Asul Hadith, there is also poems that help you understand terminologies and the core of the subject. But the same way in Farsi, there is a poem. It is in Urdu, and inshallah I will read it for you, so it just makes it easy for you to understand or to pronounce. So it is वक्त जो मौजूद है वो हाल है, गुज़रा माजी आता इस्तकबाल है, फ़ेल अपना नाम वो पा जाएगा, इसके अंदर जो ज़माना आएगा, जमा जिसमें हाल व इस्तकबाल हो, वो मुज़ारे होता है ए नेक हो, अमर क्या है चाहना एक काम का, मना करना नहीं है ए बासफ़ा, जो करे एक काम फ़ाइल उसको जान, फ़ेल वाक़े जिस पे हो मफ़ऊल मान, कलिमा से कलिमा जो पैदा तुम करो, इश्तिकाक उसका है नाम ए नेक हो, सीगे निकलें जिससे मस्तर उसको जान, इसके आखिर दन हो या तन ए जवान, नून को जब दूर मस्तर से किया, माजी मुतलक का सीगा बन गया, माजी मुतलक पे जब आता है अस्त, बनती है माजी करीब ए हक परस्त, बूद जब माजी पे आया ए सईद, याद रख वो बन गई माजी बाईद, आए जब माजी पे बाशद ए हमाम, इहतमाली और शकिया हुए नाम, मिल के मैं अव्वल हो माजी ना तमाम, जो है इस्तिमरारी निज़्द हास व आम, माजी के आखिर में ये आए अगर, हो तमन्नाई बिला खौफ व ख़तर, याद रख इन दोनों माजी का असर, हुए मुस्तमिल बिजाए यक दीगर, है ये मुस्तकबिल बनाने का तरीक, माजी पर खाहद लगा दे ए रफ़ीक, पर मुज़ारे का नहीं ए बावफ़ा, कोई मुस्तहकम क्यासी कायदा, हाँ पता आखिर का है ये याद रख, दाल साकिन इसके अव्वल हो ज़बर, गर बनाना हाल ए चाहे ए अही, मैं मुज़ारे पर लगा दे या हमी, अमर हाजिर का सुनो अब कायदा, हर्फ आखिर दो मुज़ारे से गिरा, बे भी आ जाती है जायद अमर पर, बर बे बर शिकन ब शिकन गुज़र बो गुज़र, बे के बदले अमर पर गर मीम आए, नहीं बन जाती है सुन ए नेक राय, इसमें फ़ाइल का बनाना हो अगर, अमर पर लफ्ज़ निदा इज़ाद कर,
ہائے حفظ ماضی مطلق پہ لا، اس میں مفعول اس طرح بن جائے گا ان ضروری قاعدوں کو یاد رکھ، ان ضروری قاعدوں کو یاد کر اور خدا کی یاد سے دل شاد